Dear children, today I will teach you lesson first in geography, India size and location. कल मैंने आपको इसी लेसन को समझाया था फिगर बना करके। आज उसी पाठ को हम पढ़ रहे हैं और किताब को देखें समझें। पहले ओवरव्यू क्या है। इंडिया आवर भारत, आवर मदरलैंड इज द 7th largest country in the world in terms of area and the 2nd largest country in terms of population. पॉपुलेशन की दृष्टि से दूसरा और एरिया क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश हमारा है। इट इज कंट्री ऑफ ग्रेट फिजिकल एंड कल्चर डाइवर्सिटीज। इट इज अ लैंड ऑफ lofty mountains and mighty rivers. The plains and plateau of India cover extensive areas. The highest of the mountains of the world is in this country. On the other hand, some parts of the India are almost at the sea level. India is reckoned among the oldest civilization. The people of Indus Valley civilization practiced town planning that would be enabled to even the most modern cities of the world. India is inhabited by the people with wide variety of language, subcultures and religions. However, within this diversity runs a common thread of unity. The countries comprising the Indian and subcontinent are inclusive of Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Myanmar. Neighboring countries separated by Indian Ocean are Sri Lanka and Maldives. ये आपको ओवरव्यू के बारे में हम जानकारी दी। नाउ लोकेशन कल हमने बताया था, उसी को हम फिर से बता रहे हैं। इंडिया इज बेस्ट कंट्री लेइंग इंटरली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। इज mainland extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. The topic of Cancer 23 degree 30 minutes north divides the country into almost two equal halves. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of islands from your atlas. नॉलेज बूस्टर क्या है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडिया पॉइंट इसने लिखा है, इंदिरा पॉइंट है। गॉड सब्सिडेटेड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें जो इंदिरा पॉइंट दक्षिण भारत का दूरतम मतलब सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो पानी में सी के पानी में डूब गया है, सबमर्ज हो गया है। अब साइज क्या दे रहे हैं, साइज आपको बताया। फिर देखिए, इंडिया हैज अबाउट 2.42% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। जितनी पृथ्वी है उसका 2.42% भूभाग हमारा देश है। इट कंप्राइजेज एन एरिया ऑफ अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसे हमने हिंदी में बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरा बताया था। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हो या 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हो। मेकिंग इट 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 6 अदर कंट्रीज लार्जर देन इंडिया इन एरिया में और
पहले फर्स्ट है रसिया, यूएसए, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। आफ्टर इट इंडिया, सातवां जो है ऑस्ट्रेलिया की बात। द डिस्टेंस लेइंग बिटवीन द नॉर्थ मोस्ट पार्ट एंड द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सिमेटली 3,214 किलोमीटर। द east west extent measures about 2,933 kilometers. B boundary, India has a land boundary of about 15,200 kilometers and total length of coastal line. The main line include the Andaman Nicobar, Lakshadweep Island is about 7,516.6 kilometers. Extent, India is bounded by young and cold mountains in the northwest, north and northeast. India's landmass being to form cone shape in south of 22 degrees north latitude. This landmass extends towards the Indian Ocean and divides it into Arabian Sea in west and the Bay of Bengal in east. Latitude, longitude, the latitudinal as well as longitudinal extent of mainland is about 30 both ways. In fact, the east-west extent appears smaller than a north-south extent. The north-south distance is 3,240 kilometers, while the east-west distance is 2,933 kilometers. Indian Standard Time. There is time log period of time is almost 2 hours between Gujarat in west and Arunachal Pradesh in east. This is the reason the time along the standard meridian of India 82 degree 30 minutes east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as standard time for whole country. For convenience, Indian Standard Time is followed as a standard time. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. India and the world. India is situated in southern part of Asia at the head of the Indian Ocean. It thus occupies the southern eastern central part of the peninsula of the Asian continent. This peninsula tapers towards the south and it divides the northern part of the Indian Ocean into two parts. One part lying to the east of the peninsula and the other part lying to the west of the peninsula. The northward extension of the Indian Ocean to the west of India is called the Arabian Sea, while one is the east of Indian Peninsula is the Bay of Bengal. These two extensions of the Indian Ocean provide India with a very long coastal line. The length of coastal line of India mainland is about 6,100 kilometers. Chain of lofty mountain on the north. नेक्स्ट डे आपको कल पढ़ाएंगे। इतना पढ़ के आइए, फिर धन्यवाद।